Okay, Mr. William, welcome to the Chelation Center, Islamabad. I would request you to give your introduction first, and then we can discuss later on about the chelation therapy. I'm a Canadian from Canada. I'm here on business in Pakistan. I'm a chemical engineer by training, and I'm married and I'm 76 years old. Mr. William ने कहा है कि मैं कनाडा से हूँ और मेरी उम्र 76 साल है और मैं chemical engineer हूँ. Our next question is, how you came to know about our Chelation Center? I was in the Blue Area here on other matters, and I saw the sign on the side of the Khyber Plaza building that said Chelation Center. And from my chemical background and my involvement with chelation in Canada and the United States, I have been here over a year, and I normally get treatments several times a year on a maintenance basis. I had many treatments at first, and then only 3 or 4 per year later. And since I was going to be here a long time, I wanted chelation treatments, and so I decided to come and talk to Dr. Shahir Abbas. And मैं कनाडा में बहुत सारी chelation थेरेपीज़ करवा चुका था और उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट थी. तो मैं पाकिस्तान जब आया तो मुझे ज़रूरत थी chelation थेरेपी की और मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से किए जाए. तो एक दिन बाई चांस मैंने इनका बोर्ड देखा तो मैं डॉक्टर शाहिर अब्बास के पास आया और डिस्कस किया. Our patients would be interested to know something about the chelation therapy for their awareness, since when it started, and all about chelation therapy, which can be helpful for my patients. All right. Chelation therapy started in 1946 in the United States. And the reason it started is because they found that in treating people with a certain chemical, which is called EDTA, in treating people who worked in ammunition factories and armaments factories, some people had high metal content in their blood, high copper, high tin, high lead, and this chemical is used to remove those high metals. And they found that those people who also had heart problems, specifically atherosclerosis, which is plugging up of the arteries, were improved. They found that the people with heart, so they really found it out by accident. I'll tell you more in a moment if you'd like to translate. मैंने विलियम से ये पूछा कि बेसिक कोई इंफॉर्मेशन दें chelation थेरेपी का कि कब शुरू हुई. तो इन्होंने बताया कि 1946 में एम्यूनिशन फैक्ट्रीज़ जहाँ असला वगैरह बनता है उन लोगों को कुछ तकलीफ़ हुई रगों में, क्योंकि उनसे एम्यूनिशन फैक्ट्री की जो वेस्ट होता है उससे जिस्म के अंदर लेड, मरकरी, आयरन डिपॉजिट हुआ. तो जब उन्होंने EDTA से ट्रीट किया तो वो इम्प्रूव हो गए. उसके बाद रिसर्च से फ़ौरन ही बाद रिसर्च से ये देखा गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि खून की नालियों की बीमारी है और खून की नालियाँ बंद होती हैं, उसकी इलाज के लिए भी EDTA बहुत ही मुफीद है. बस ये 1946 से लेके अब तक कामयाबी से सारी दुनिया में इसका इलाज हो रहा है. So
Mr. William, can you tell me about your disease, how it started and how what was the lab results and what you did, all about your disease, please? All right. In normal checkups, we go to the doctors. We should once every year or so, and they take blood samples to check to see if our cholesterol and other minerals and levels are in the right range in our blood. They found for me that I had high iron and high copper. At what age? About 40 years of age. Yeah, all right. Okay. You want to translate that and I'll continue on the same subject. कनाडा में तरीका इलाज ये है कि हर साल हर आदमी अपने खून में मेटल्स और दूसरी चीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल मेटल्स वगैरह के लिए टेस्ट करवाना होता है। जब मेरी उम्र 40 साल थी तो मैंने अपने टेस्ट में देखा कि मेटल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी ये डिटेल से बताएंगे। सो व्हाट दे डिटेक्टेड इन योर ब्लड एट दैट टाइम? They found that normally I was healthy, and my family background is healthy. My father died at 85 and my mother at 80 years of age. But there was high iron and high copper. You might ask, what's wrong with high iron? Isn't iron supposed to be good for people? Mm-hmm. The answer is yes. We all have iron in our system and it's important, but 1 person out of every 5 on earth has high iron. High iron was an advantage thousands of years ago when we were running down animals and we would scratch and bleed and lose a lot of blood. And if you had high iron, your blood, your hemoglobin you would still be healthy as compared with people with low iron. So when we were bleeding every week from fighting with animals, it was an advantage. But in modern society, we are not scratched heavily every week and we don't bleed, and the iron builds up in some of us, 20% of some of us, and it causes shorter lifespan. It can accelerate diabetes in some people, and it accelerates the plugging of the arteries and the veins in the body. So high iron affects many organs in the body, and it's bad for you. I'll tell you about copper in a moment. So 40 साल की उम्र में हमने देखा कि हमारे रिज़ल्ट में आयरन की ज़्यादती थी खून में। आयरन जिस्म में बहुत ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन वगैरह बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादा आयरन ख़तरनाक होता है। 20% लोगों में ये हायर लेवल्स पे होता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी का उम्र इंसान की कम हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। आयरन खून की मुख्तलिफ़ नालियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से खून की नालियां बंद हो जाती हैं। तो पुराने ज़माने में सदियों पुराने ज़माने में ये हाई आयरन नहीं हुआ करता था। वजह ये होती थी कि लोग शिकार वगैरह खेलने जाते थे, आपस में लड़ाइयाँ करते थे, तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनको ब्लीडिंग खून निकल जाता था, मुख्तलिफ या आपस में लड़ाई की वजह से या जानवरों पे अटैक करने की वजह से जानवर उन पर हमला करते थे तो खून काफ़ी बह जाता था। तो खून में आयरन ज़्यादा उस वक्त नहीं होता था, लेकिन अब चूँकि आयरन खून निकलने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, खून ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, इस वजह से अब जो हाई आयरन है लोगों में 20% लोगों में ज़्यादा आयरन की मकदार हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इंसान को हो जाती हैं। और अभी विलियम आपको कॉपर की वजह बताएंगे कि कॉपर अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर जिस्म में क्या होता है। यस विलियम, इफ़ द कॉपर इज़ इंक्रीज इन द बॉडी, व्हाट हैपन्स?
With higher copper levels, they found that this contributes to depression, and in severe cases, an illness called Wilson's disease. Depression is people who are sad a lot, and abnormally sad, not just sad because somebody died or I failed a test today as a student, but people who are more introverted and whose blood levels test high copper. High copper is bad and it should be removed from the body, and this EDTA chelation does remove that. One other thing I want to say is that the EDTA also helps to remove, to some degree, high aluminum in the body. And high aluminum has been implicated. There seems to be a connection between high aluminum in that they find that people who have Alzheimer's disease have high aluminum in the brain. They're not sure if this is because of the breakdown of brain cells allowing aluminum to be in the brain or to come up to the brain and not be excreted or pushed away, pushed out.